You are there, so you start reading. All right. The act may be the same outwardly, but the difference in the inward feeling makes a world of a difference. Action by a spiritually motivated, selfless person elevates him morally and spiritually, whereas the same action by a worldly person serves to bind him. A karma yogi farmer will look upon farming as his swadharma. It will, of course, fill his stomach, but he's not farming for that purpose. He will eat only to enable him to perform the swadharma of farming. Swadharma is the end for him, and food a means thereof. Therefore, but to another farmer, food will be the end and farming a means therefore. These two attitudes are the reverse of each other. अब फार्मर फार्मिंग कर रहा है पेट भरने के लिए नहीं, Hmm. जचती है ये बात? Uh, योगिता, तू खाना बना रही है खाना खाने के लिए नहीं। ऐसा होता है? नहीं। तो ऐसा करना है, ऐसा बोल रहे हैं विनोबा जी। जो भी हम काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं घर को साफ करने के लिए नहीं। दिस इज माय स्वधर्म। हाँ, तो मैं इसलिए इस बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है, एक तो हम ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन आर वी एबल टू डू दैट ड्यूटी विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी? देयर इज अ डिफरेंस। मैंने डॉक्टर जयदेव से ये कहानी कई बार सुनी है। मैम थोड़ा वापस से रिपीट करो ना, और थोड़ा हाँ, जोर से बोलो क्योंकि मुझे सुनाई हाँ, नहीं दे रहा है मेरा। ओके। मैंने कहा एक सेकेंड, मेरा वॉल्यूम तो कम नहीं है, कभी कभी क्योंकि मैं कुछ सुन रही होती ना, उसका वॉल्यूम लो हो जाए, नहीं 100% है। कभी कभी हम ड्यूटी, हम वैसे तो हमारी ड्यूटी समझते हैं कि हाँ ये तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के करना है ड्यूटी, लेकिन मन में वो कर्तव्य वाली भावना वो होती है कि नहीं, यहाँ बात उस भाव की है। तो इस संदर्भ में डॉक्टर जयदेव से ये कहानी मैंने कई बार सुनी है। वो 3 स्टोन ब्रेकर्स की कहानी करके मैं हमेशा उसको रिफर करती हूँ कि एक आदमी जा रहा था, कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो उसको ऐसे ही उत्सुकता हुई देखने की, पूछने की कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो एक के पास में गया और उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है क्या? पत्थर तोड़ रहा हूँ। ठीक है बाबा, आगे चला गया। एक दूसरे को पूछा उसने थोड़ी दूरी पे जाके, तो क्या रोटी कमा रहा हूँ, बाल बच्चों का पेट भरना है, पत्थर तोड़ के थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो शाम को घर में खाना हो जाएगा। चलो ठीक है। तीसरे को पूछा वो क्या कर रहा है, वो कहता है मैं मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ पर रोज भक्त आएंगे और अपना माथा टेकेंगे, कितना सुंदर दृश्य होगा ना। तो अब काम तो तीनों कर रहे हैं, और तीनों जो काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, उनको उसका फल भी मिलेगा। तो काम असल में कहाँ हुआ? फिजिकली बाहर देखने को तो एक ही है, लेकिन काम यहाँ पर हुआ। दोनों को फल इसके हिसाब से, तीनों को फल इसके हिसाब से मिलेगा। सो टू हैव अ पर्पस, टू हैव अ हायर पर्पस, to have a larger goal in life, to have a vision that makes your work done with a sense of duty. अब कहने को तो वो तीनों का ही घर में पैसा जाएगा, पेट पलेगा, वो तो होगा ही ना, और तीनों को भी मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ रही है ना, पत्थर तोड़ रहे हैं। right. लेकिन तीसरे वाले को वो मेहनत नहीं लगेगी, जो थकान भी लगेगी ना वो सुख वाली होगी, क्योंकि शरीर तो तीनों का ही खप रहा है ना, धूप तीनों को ही उतनी ही लग रही है ना। तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। जो तीसरा था वो कर्मयोगी था थोड़ा,
कहने को तुम सेकंड वाले को बोल सकते हो, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन वो ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक पे था। तीसरा वाला जो था वो लीवर की तरह काम कर रहा था, यू नो, दैट स्मॉल एफर्ट मेकिंग अ लार्ज रेज। तो यहाँ पर ये फार्मर का जो एग्जाम्पल दिया है विनोबा जी ने, मुझे तो ये ऐसा लगता है इसी ढंग का है। द फार्मर विल लुक अपॉन फार्मिंग एज हिज स्वधर्म। इट विल ऑफ कोर्स फिल हिज स्टमक, दो ही इज नॉट लुकिंग फॉर दैट। यानी वहां पर उसका खत्म नहीं हो जाता, वो तो एक साइड का रिजल्ट है बाय एंड बाय, बट ही इज नॉट फार्मिंग फॉर दैट पर्पस। यानी पर्पस कितना मैटर करता है वो देखो। He will eat only to enable him to perform the स्वधर्म। ये एक एडिशनल बेनिफिट होएगा उसका कि अच्छा लग रहा है तो खाए जाओ, मिल रहा है तो खाए जाओ, वो नहीं होगा। He will eat for the purpose of fulfilling his स्वधर्म। यानी कि वो अपने आप को निग्लेक्ट भी नहीं करेगा, ओवर ईटिंग भी नहीं करेगा, और जो खाएगा वो स्वधर्म करने के लिए खाएगा, तो उसका जो गुणवत्ता है उसके लिए वो उतनी सात्विक होगी, उतनी सकारात्मक होगी, पॉजिटिव रहेगा। He will eat only to enable him to perform the swadharma of farming. Swadharma is the end for him. So, swadharma तब होता है जब उसको सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ किया जाए, अ लार्जर पर्पस। तो ये हम हमारे लिए कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं जरा देखो। बट टू अनदर फार्मर फूड इज द एंड एंड फार्मिंग इज मीन्स, देयरफॉर these two attitudes are the opposite of each other. एक वर्ल्डली है और एक अदर वर्ल्डली है, एक व्यावहारिक है, एक स्पिरिचुअल है, डिवाइन है। तो काम तो वही करना है, तो उसको हायर करके क्यों ना करो। यानी कि सब खेल इतने मात्र से उसको अलग कर सकते हैं, देखो। सो इट्स एक्चुअली इन आवर हैंड्स। जस्ट इमेजिन व्हाट पावर वी हैव। माय गॉड, that scares me sometimes, we have so much power. Yeah. चल, और कुछ बोलना है किसी को, और कुछ आ रहा है? So I'm reminded of a television series. हाँ. It is on Netflix. It is called The Good Place. And the premise is that there are 4 human beings who are actually very shitty human beings, and they are sent to hell. But the devil, what he has done is designed hell to be the good place. Like it's as if they, to tell them they have gone to heaven, and then torture them in heaven. एंड उसमें वो एक लड़की रहती है, वो बोलती है कि अरे आई रेज्ड 60 million फॉर पुअर पीपल एंड वट एवर बट हाउ कम आई एम स्टक इन द बैड प्लेस, ऐसे। तो तभी वो डेविल बोलता है द रीजन इज बिकॉज you did not do it with the intention to care for them. You did it with the intention to become superior and important. So even if you raised billions, what you intended matters. My God. But all good intention and no good deed leads the way to heaven, hell also. Yes. तो दोनों होना चाहिए. Yeah, and I really like that series because I it love shows. this. Very good example. It is the series also talks about a lot of philosophers and about morality and ethics, and how these 4 humans who are then in hell, and they learn about ethics and morality, and they actually give you examples how they are learning, and they get better, and they then go to heaven, of course. क्या So बात it's है. like a comedy series, but it is very impactful. Wow. I'm Yeah. so happy somebody can make something so creative like this. Yes. Make it so, meaningful. It is very much. Philosophy brought down in the reality, huh? Yeah.
virtual it is, reality से. yeah, the background is the Christian concept of heaven and hell, not just Christian, it is Even also, then, heaven and hell, everybody yeah, has. heaven and hell, everybody has basically. लेकिन but उन लोग का, because it's an American series, it is हाँ. based, background वो है, और उसके ऊपर, and they talk about this dharma, they talk about all this duty, what you just said, you know, with what intention and all. So all these four humans, they have their different vices and how how they are trapped there and all. Wow. चलो पढ़े आगे. Yes. Okay. Yeah. This has been figuratively described in the second chapter. It is stated therein that a karma yogi is asleep when others are awake, whereas he is awake when others are asleep. What does this mean? We are even mindful about filling our stomachs, while a karma yogi is keen about spending every moment in work and does not waste a single moment. While ordinary worldly persons live in order to eat, he eats only because something has to be fed to the body to survive, to perform selfless service. While ordinary worldly persons enjoy eating, for a yogi it becomes a burdensome task. He would not therefore eat with relish. He would have control over his palate. The attitudes are thus diametrically opposite to each other. What gives pleasure to one is burdensome to other. This has been metaphorically described as the night for the one is a day for the other, and the day for one is a night for the other. The actions look alike, but what is important is that a karma yogi enjoys work, leaving aside any attachments to the fruit of his actions. He will eat and sleep like others, but his attitude towards everything will be different. To impress this point, the ideal of the Sthita Prajna has been put forth at the outset itself in the Gita, although 16 chapters are still ahead. लास्ट चैप्टर में लास्ट के जो 18 श्लोक हैं सेकेंड हाँ. चैप्टर में दे आर ऑन हाँ. स्थित प्रज्ञा. Okay. एंड विनोबा भावे हैज नॉट गिवन द डिटेल्स ऑफ इट. एक Okay. पैराग्राफ में उसको समेट दिया है. अच्छा. He has written a separate book on the Oh, qualities of a Sthita Prajna. okay. Because What is a इस Sthita Prajna? कॉन्टेक्स्ट के अंदर उतना डिटेल में जाने का कुछ मतलब नहीं था. You know, no, the context of talks on the Gita. Yes, a little bit. Could you please In revise for me once? when he was a prisoner, Right. so those prison mates had kind of requested him to I give this remember. talks in the Gita. So he's actually talking to the prisoners. Okay. ये सत्याग्रह वगैरह के अंदर जिनको कैद कर लिया था वो भी और रेगुलर प्रिजनर्स भी. So Okay. he's talking to them. Okay. And Could you tell me what the meaning of Sthita Prajna? हाँ, वो तो योगिता बताएगी. ये Okay. सारा सब स्थित प्रज्ञा की वजह से ही क्लास शुरू हुआ है. Okay. She is the key to it. All right. योगिता बताओ अभी. म्यूटेड है तू, थोड़ा अनम्यूट कर अपने आप को. हाँ हाँ वही. वो कभी कभी ये पैड का, लैपटॉप के पैड का माउस चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, तो वो दूसरा माउस लेना पड़ता. तो बेसिकली फॉर मी, जब भी मतलब मैं ये फील्ड में नहीं थी, मतलब स्थित प्रज्ञ मीन्स राम, श्री राम, भगवान श्री राम. Okay. मीन्स के अगर उनको बोला कि कल सुबह आपको राजगद्दी पे बैठना है, दैट इज द सेम. एंड कल सुबह उनको वही टाइम पे मतलब बैठने के समय पे ही उनको बोला कि आपको वनवास में जाना है, दैट इज द सेम. मतलब बैलेंस. Okay. Okay. ओके. सो फॉर मी बैलेंस मतलब मुझे ये फील्ड में आने से पहले मुझे ऐसा पता था कि मुझे उनके जैसा बनना है. मतलब कि कुछ भी हो जाए, कितना भी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, घर में भी कुछ हो जाए, मेरा दिमाग भी कितना भी खराब हो जाए, लेकिन आई वॉन्ट टू बी विथ बैलेंस. ऐसा. तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या उसमें क्या है, ऐसे ही हो जाता है. तो मतलब मैंने ऐसे मैम को पूछा कि मुझे कैसे भी करके स्थित प्रज्ञ बनना है. नाउ दो आई एम इन द जर्नी ऑल्सो, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे बैलेंस कहाँ पे जा रहा है, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, वो मुझे नहीं फील हो रहा था. बट इन दिस 3-4 years आई हैव सीन सो मच चेंजेस इन माई सेल्फ. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं वो जर्नी के ऊपर हूँ.
Wow. अभी मैं मैम से बात करी थी, मैं रिट्रीट के आई, उसके बाद 3 दिन तो बाप रे मैं ऐसी थी। तो मुझे ऐसा अगर मैं ये फील्ड में नहीं थी तो मुझे नहीं समझ में आता था कि अच्छा मेरा नेचर चेंज हो गया है, मुझे बैलेंस करना है, वो मुझे नहीं पता चलता था। हाँ, लेकिन मैं ये सब चेंजेस में अपने आप में देख रही हूँ तो मुझे अभी पता चलता है कि ये सब बैलेंस होना चाहिए, दोनों भी बैलेंस होना चाहिए। और मुझे ऐसा था कि ऐसा बोलने से स्थित प्रज्ञ हो जाता है, लेकिन जब भी वो 18 श्लोकास जो है उसमें तो हाउ स्थित प्रज्ञ इज टॉक, हाउ स्थित प्रज्ञ सिट, हाउ स्थित प्रज्ञ वॉक, एंड हाउ द सी द मैटर, ये सब उसमें बहुत डिटेल्स में दिया गया है। इवन मैम ने बोला भी है कि उसके लिए अलग से एक प्रतिपक्ष भाव के जैसा कोर्स बनाना है। मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन इतने सारे क्लास हो जाते हैं तो वो बैलेंस नहीं रहता ना, तो मैं थोड़ा डर रही हूँ कि मैं हाँ बोल दूंगी, लेकिन फिर अगर अभी नहीं, जब थोड़ा टाइम मिलेगा तभी करेंगे। हाँ, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं रोज सोचती हूँ उसके कोई एक बारे में। कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद। हाँ, क्योंकि उसको भी टाइम देना पड़ेगा ना, उसका भी उसको होमवर्क बहुत करना है, मिलेगा, और बहुत टाइम बैक चाहिएगा। टू बैक इतने सारा क्लासेस ये वो होता है, इसके लिए मैंने अभी तक उसमें कुछ हाँ ना बोला नहीं है, बट आई एम वेटिंग, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं तैयार हूँ वो करने के लिए। सो I ओवर टू मैम। yesterday saw I have a book by Jaya Rao on the perfect being, which is on Sthita Pragya. तो मेरा टॉक्स ऑन द गीता जो घर पे मैं चालू है मेरा पढ़ने का, आई एम ऑलरेडी ऑन द 17th चैप्टर। वो खत्म हो जाएगा तो आई विल पिक अप दैट, तब तेरे कोर्स की तैयारी भी हो जाएगी फिर से। यस यस मैम, क्या बोला आपने? जया जया राव। राव। हाँ, शी गिव्स सरमन्स ऑन भगवत गीता, बहुत अच्छे उसके टॉक्स रहते हैं। ओके। हाँ, और मॉडर्न डे से रिलेट करके बोलती है। यानी बहुत समय से है मेरे पास में, लेकिन अभी शायद इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि मैं खुद का भी पढ़े जा रही हूँ, तो उस पे नजर पड़ी और वो फिट हो गया, तो अभी निकाल के उसको बाहर रख ली। ये थोड़ी सी बाकी है, उसके बाद मैं उसको शुरू करूंगी। और वैसे मैंने एक पीडीएफ जो विनोबा भावे का है ना ऑन दिस स्थित प्रज्ञा, वो भी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। जिस दिन हम उस सेक्शन पे थे, तो उसी दिन मैंने हाथ किया, मैंने कहा बाद में नहीं ढूंढा जाएगा। मैं ढूंढ के पढ़ती हाँ, हूँ। ढूंढा उसमें तो मिल ही गया, तो मैंने कहा चल पोस्ट कर ही दो। हाँ, उस दिन पायल और मैं अकेले थे क्लास में। तो पायल से वाह मैम इतनी जल्दी डाल भी दिया, मैंने कहा मिल गया तो। हाँ, एक्चुअली वो भाई दूज का आई थिंक दिवाली के बाद का हाँ, उस समय का ट्यूसडे टाइम था। था, तू बिजी उस थी उस दिन मेरे समय, घर तू पे नहीं आई गेस्ट थी। थे तो मैंने वो अटेंड हाँ, नहीं किया था। मुझे या बहुत मन था करने का, बट नहीं हुआ मेरे क्योंकि स्थित प्रज्ञा का डिटेल तो था नहीं ना, तो तू क्या करती है अटेंड करके। मेरे को कभी नहीं भूलता, इसको भी याद होएगा कैसा अपने आप से चिढ़ती थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी मने मन, और मैं इतना सीरियस मुख लेके उसको सुन रही हूँ। मैंने कहा माय गॉड, भोलापन भी कितना भोलापन। बट इतनी उमंग कि दैट्स ड्राइविंग हर ऑल थ्रू हर लाइफ नाउ। सो ऐसा लार्जर पर्पस ऐसे मिल जाता है। तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, सुनना तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। चलो पढ़े आगे। यस। इसमें भी एक सिमिल पॉइंट ये बहुत अच्छा है आगे चलने से पहले, ये हाँ नाइट और डे वाला हाँ समझ में आया ना। हाँ। वैसे देखा जाए तो ये वाक्य बड़ा विचित्र लगता है कि जो आम व्यक्ति के लिए दिन है, कर्मयोगी के लिए रात है, और जिसके लिए रात है तो उसके लिए दिन है। लेकिन वो जो एग्जाम्पल दिया है उससे अच्छे से समझ में आ जाता है। खाने पीने का जो एग्जाम्पल है, मोस्ट पीपल लव फूड, यस। खाने के लिए जीते हैं, लेकिन कर्मयोगी जीने के लिए खाता है, तो उसको खाना भी एक एडिशनल काम लगता है। तो दैट्स लाइक नाइट।
Very nice example and simple example that everyone Very will relate with. straightforward. Yeah. So we need to apply this in more areas of our life besides eating. टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, व्हाट्सएप को लेके बैठ जाने का, all these also are night for the yogi. Yes. क्योंकि उसको बाकायदा महसूस होता है कि ये टाइम वेस्टर है और वो उस तरफ नहीं जाएगा, उतनी क्लैरिटी माइंड में आ जाती है. एंड देयर इज नो फीलिंग बैड अबाउट इट कि ये सब आई लेफ्ट ऑल दीज रसा ऑफ लाइफ. That reminds me, you must change your DP, Nivedita. Okay. समझ गए? This is Why? the context. यही तो context है. नहीं समझी. Question. अच्छा, you're talking about WhatsApp DP? हाँ. अच्छा. Okay. चलो. पढ़. The similarity and difference between the actions of a worldly man and those of a karma yogi are immediately clear. For example, if a karma yogi is engaged in the care of the cows, he will do the work with the idea of serving the society by providing it with plenty of milk. And at the same time, he will look to it as an opportunity to have a relationship of love with all the lower order of beings through the service of the cows. He will certainly get his wages, but that is not his motivation. Real joy lies in the divine feelings informing the actions. Another such a beautiful example. But many Yes. people will say this is all wishful thinking, unnecessary thinking. ऐसा कुछ होता है क्या? बोल. तू भी ऐसा बोलेगी? Yes, because when I'm reading this, I'm reminded of the book by Gurcharan Das, The Difficulty of Being Good. And I never really thought that that was true. But day by day, I do think that, yeah, with this bhav and everything, um, it's I'm not saying it's not possible to live this way as a karma yogi does, but it also feels that we are on this planet Earth in this human form with this flesh body. There must be a reason for it. Why aim just for the spiritual when we are on the physical? Might as well give into the physical also, right? I mean, I'm not asking you, right? It's just my opinion. But that is one way of living. And while living that way, you can also live this. But they contradict each other. No, not at all. How does it contradict? Now read this para again. What is the contradiction? Show me. So, read the whole thing again. Okay. Loudly. And you can pause wherever you want to. Okay. The similarity and difference between the actions of a worldly man and those of a karma yogi are immediately clear. For example, if a karma yogi is engaged in the care of the cows, he will do the work with the idea of serving the society by providing it with plenty of milk. And at the same time, he will look at it as an opportunity to have a relationship of love with all the lower order of beings through the service of the cows. He will certainly get his wages, but that is not his motivation. Real joy lies in the divine feelings informing the actions. Okay. So this is I get this, that while I'm working I can have that sattvic bhav of doing something greater or having a greater purpose. But after a point, if I think it won't allow you to go further ahead after a point. What you are talking about is think consciously in this manner. Initially, it will be that. Okay. But what is Vinobaji talking about is the motivation. Motive behind it. एक है motive कि बस wages का चाहिए. If just wages alone is your motive, then your thoughts will go haywire, etc., and do only as much as for the wage. You couldn't care for the health of the cows, their cleanliness maybe, or whether जिसको बोला था उसके पास दूध पहुंचा कि नहीं पहुंचा.
and not necessary to have that love feeling while serving the cow. समझे? जो वेजेस के लिए एक मोटिवेशन है, उसको खाली महीने में एक ही बार खुशी होगी जिस दिन उसको पगार मिलेगा. Whereas a karmayogi Happy has every every moment of enjoyment. He will come to the work with joy. He will be happy to see the cows. He will talk to them. He will understand them better. Cows will be happy with him. They will respond in a certain manner to him. And when somebody comes to buy milk, if he has it, doesn't have it, he will have an appropriate way of responding to them. And he'll still build good relationship, whether he can serve them or with the milk or not that day. That's the difference. Okay. Where is the controversy in it? It's the motive. Okay. So I was thinking in a totally different angle altogether, where suppose he just has 10 cows, he's able to attend to the cows, and because his milk is supposedly so good quality and provides health and healing, maybe everyone comes to him, he gets more money, he purchases more cows, then he can't attend to, let's say, hundreds of cows. Somewhere, that So that is it's when the one is dilute. doing it for this motive. जब So मोटिव तुम्हारा हायर है तो उसके लिए भी ऑटोमेटिकली प्रोविजन होगा. okay, You are not aiming at getting a bigger cow shed and having larger number of cows and making bigger business, because that's right, not your motive. that was not the That may motive. happen Yes. just eventually by itself, by default. Okay, understood. Now I get it. So swadharma. So your swadharma is not this serving the cow. Your swadharma is that higher bhava in your head. Okay, understood. क्या बोलती है योगिता? जमा? हाँ मैम, बराबर है. क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे दो जो एग्जाम्पल दिए उसमें वो जो भाव है उसके साथ में वो इंटेंशन भी है और वो एटमोस्फियर भी है. मतलब सब कुछ यूनिवर्स से लेके बोलो कि सब कुछ वो आपको हेल्प करता है. Exactly. Because of your attitude. Because wherever your intentions are, that is the level of energy you are attracting. Yes, yes. And I again liked what you said, like if you do it with the intention of just this pure intention of connecting and serving to others and connecting with these beings. And as a byproduct, if your cow shed and number of cows increase, then trust, again, surrender, let go, trust the God, universe, whatever life, because your motive is higher. So in fact, it will take care of. वो hotline हो जाती है. And it will take care of the fact that, however you want to reach it, it will reach, that will stay. बिल्कुल, you said it right. ये सब में एक चीज मैटर है कि you have to be faith and trust for that. Yes. Yeah, all the time. बिल्कुल. Yes. So अगर ये सब कुछ है, then होता सरेंडर और वो सब कब आता है? जब वहां पे आएगा. फेथ और ये होगा तभी सरेंडर आता है. नहीं तो एकदम. Wow, so beautiful, no? Yes. Yeah. चलो, है ना टाइम? एक और पढ़ लेते हैं. हाँ, है ना, 50 हुआ है टाइम. है. Okay, 7. We are on 7 now. Yeah. Every act of a karma yogi unites him with the whole universe. We are supposed to take meals only after watering the tulsi plant in the courtyard. This is for creating. There is a custom of watering tulsi. अच्छा, वो पीडीएफ में से पढ़ रही है ना, वो पीडीएफ पुराना है. अपना वाला वर्जन थोड़ा सा अलग है. Okay, ठीक है. Go ahead. This is for creating a bond of love with the whole world of plants. How can I eat keeping the tulsi plant starved? Beginning with the identification with the cow and the tulsi plant, we are to progress till we are one with the whole creation.
In the Mahabharata war, fighting used to stop at sunset and everybody would then go for performing religious rites, etc. But Lord Krishna would rejoice in actions like unyoking the horses from the chariot, giving them water, gently massaging their bodies and nursing their wounds. What a joy the Lord found in such service. The poet is never tired of describing all this. Bring before your mind's eye the picture of the divine charioteer carrying the feet of the horses in the folds of his lower garment and feeding the horses with his own hands, and realize how joyful Karma Yoga is. Karma Yoga, in Karma Yoga, all actions attain the highest spiritual character. Take khadi work. A khadi worker hawking khadi from door to door, carrying its load on his head, never feels tired. For he knows that millions of his brothers and sisters are famished and is inspired by the idea of providing a few morsels to them. His work of selling a few yards of khadi is linked to Daridra Daridra Narayan. Narayan, God in the form of the poor. Um, Hmm. so I understand the concept, like I understand it here. I can feel a little bit in my Hmm. heart. Um, okay, I understand it. I don't have questions Hmm. here. Why is God called Daridra Narayan? Hmm. नहीं, दरिद्र नारायण को गॉड नहीं बोला है. God in the form of the poor. या पुअर को दरिद्र नारायण बोला है. Okay. Poor has been referred to as God. Okay. तो each one is serving. अब कोई काऊ को सर्व कर रहा है, तो कोई हॉर्स को सर्व कर रहा है, कोई चीटियों को सर्व कर रहा है. खादी वर्कर्स would want that, जो एग्जांपल दिया है, उस समय खादी का चलन बहुत था ना. और खादी इसलिए बनाते थे कि भाई गरीब लोगों को काम मिले, चरखा चलाने वाला. Okay. और ये जो खादी बेचने जाता है, घर घर बेचने जाता है, मेहनत तो होती है ना. हाँ. लेकिन थोड़ा भी जो बेच सकता है, तो वो फिर भी दर दर भटकता है कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मैं बेचूंगा तो उनको भी चुकाऊंगा, तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनका पेट भरेगा, गरीबों का. Yes. तो गरीबों को दरिद्र नारायण वर्ड यूज किया है. Okay. गॉड इन द फॉर्म ऑफ द पुअर. दरिद्र इज पुअर, नारायण इज गॉड. So instead of calling them poor, the whole concept changes. Yes. एक तो मैं पुअर को दे रहा हूं, तो यू आर लुकिंग डाउन अपॉन देम. और एक मैं दरिद्र नारायण के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो you know doing It's for something God in the higher. form of There is poor. a higher cause. You see, right from the beginning, this chapter is like this. Yeah. It is only changing your perspective to make the most menial thing is possible to do it as a karma yoga. So whatever you may be doing, however small and useless kind of thing you might think you might be doing, but if you're doing something, you can achieve the highest with that. You can do that with that highest bhava. तो गरीबों को रोटी मिल जाए, उसके लिए भी कुछ कर रहा हूं, तो उसको गरीब को दरिद्र नारायण बता दिया. So it's only a perception, na? Yeah. And that is real action. Karma is that. ये इस बात को समझना है इस चैप्टर में. What is really the karma? That intent, that vision. And how much you hold it and how honestly and sincerely you mean it. शुरू में Wow, you do it intelligently, but finally it should become a bhava. Experiment, experience, and then just be. Yeah. And Explore, experiment,
experience and be. Like mothers or parents are natural karma yogis doing for the good of their Yeah. children. चल 4 बजे तेरे को जाना भी होता है ना, नहीं करते, 4 ही मिनट बाकी है। और अच्छा करेक्ट पॉइंट पे आके रुके हैं, सो इट्स नॉट स्टॉपिंग इन बिटवीन। मैम मैं हाँ, क्या बोल। बोलती हूँ कि क्या? हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो जो क्या बोलते हैं, ये जो स्थित प्रज्ञा का जो 18 श्लोकास है ना, उसकी पीडीएफ हिंदी, मतलब वहां से जो वो लोग साबरमती आश्रम में जो पढ़ते हैं, वही तो वो भेजी है। है मैंने। हाँ, तो वो हम लोग ये ग्रुप के अंदर रीड कर सकते हैं ना, मतलब कोई भी एक रोज एक श्लोक पढ़ के बोल के उसमें रिकॉर्डिंग डाल सकता है। उसका जैसे इसका डिस्कशन हो रहा है ना, उसका भी वैसे ही होएगा, वो भी काफी बड़ा है। अच्छा ठीक है, चलेगा। ओके, या तो हम उधर ही रुक के सेकंड चैप्टर के बाद में उधर जाते, लेकिन वो अपने आप में एक बुक है। नहीं नहीं, वो अलग ही है पूरा। हाँ। बाद में करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और अपने को उतना समझ में भी नहीं आने वाला है अभी उसका, ये करने जब के तक बाद में पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा। क्योंकि वैसे भी तेरे को ये तो समझ में आ गया कि ये आज की इमीडिएटली तो मिलने वाला नहीं है। लॉन्ग जर्नी। अभी वो योगिता तो रही नहीं, नहीं, है ना। अभी सही। योगिता समझदार हो गई है, उसको मालूम है कि रास्ता लंबा है, धीरे धीरे चलना है। बाय गॉड, हाउ वी स्टार्टेड दिस। यस यस, मस्त, वेरी नाइस। और मतलब मुझे वो बोलना था कि अगर वो पर्सपेक्टिव, she got locked out. Got disconnected, yeah. ये ग्रुप भी फिर उसने फॉर्म किया था। Oh, okay. So निवेदिता is the administrator of this group. मैंने कहा ठीक है, तेरे को करना है तो बना, लोगों को ज्वाइन करवा। She only called up people and told them आओ ज्वाइन करो। So टाइम nice. उसी ने डिसाइड किया। मैंने कहा ठीक So है, nice. जिस टाइम पे तेरे को टाइम है वो डिसाइड कर, तब कुछ बाकियों को इस टाइम पे आ सकते हैं तो करेंगे। मैंने कहा फिर भले 4 ही लोग हो, अपन पढ़ेंगे। चल आई थिंक उसको 4 बजे कुछ क्लास भी होती है, 4 सवा 4 बजे। Okay. Maybe she may not be able to join back. Chal, Yeah. but so happy that you joined. Yeah, it was a very nice class and Good. scary. I mean, if karma can just originate here with the intention, it's so Yes. scary because sometimes, we Yeah. are so flawed.